जय हिंद दोस्तों। आज फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नो अबाउट फार्मेसी में। एंड गाइस, दिस इज पवन कुमार चौधरी एंड टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट टॉप 10 बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर एनी फार्मा इंडस्ट्री in the production, in the quality control, in the quality assurance, in the R&D, F&D, in the every department. These questions is very important for if you are going to give any interview. So guys, let's start without wasting a time. One more important notification guys, this is the part number 2 of top 10 basic interview questions for pharma industry. अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है सो प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड टैप ऑन द लिंक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट नंबर 1 को देखिए, आफ्टर डेट पार्ट नंबर 2 को देखिए, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इंटरव्यू क्लियर हो पाए। इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ए व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन द टैबलेट कोटिंग। ऐसी कौन सी मेथड से जो टैबलेट कोटिंग में यूज़ की जाती है गाइस। सो गाइस, जनरली 3 मेथड्स आर यूज्ड फॉर द टैबलेट कोटिंग। सामान्यतः हम लोग 3 मेथड्स यूज़ करते हैं किसी टैबलेट की कोटिंग के लिए। sugar coating, film coating, enteric coating. Guys, you can pause the video and you can take a screenshot, otherwise you can write in your notebook. So कौन कौन से 3 टैबलेट कोटिंग मेथड्स होती है जो हम यूज़ करते हैं? शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग एंड एंटेरिक कोटिंग। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, लेट्स गो फर्दर। So what are the coating equipment which are being used? What are the coating equipments which are being used? So for the coating process, use one of the 3 types of following equipments. First one is a conventional coating pen. Second one is a perforated coating pen, and third one is a fluidized bed coater. One more time: conventional coating pen, perforated coating pen, and fluidized bed coater. These are the coating equipment which are being used. So guys, next one is that what is the aerosol in the pharmaceutical industry? Aerosol क्या होता है in the pharmaceutical industry? So aerosol is a pressurized dosage forms containing one or more therapeutic active ingredients which will produce a fine dispersion of liquids and or solids materials in a gaseous medium during the operation. Guys, till now if you didn't like, share and subscribe our YouTube channel, so please like, share and subscribe as fast as possible so that you will get further information easily. Guys, आगे चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इन प्रोसेस टैक्स पैरामीटर्स ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन। ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन व्हाट आर द प्रोसेस इन द पैरामीटर्स? सो अपीयरेंस, ग्रुप वेट, इंडिविजुअल वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, थिकनेस, डायमीटर, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, स्पीड ऑफ मशीन, compaction force, difill depth and disintegration time. Guys, remember this question is a must for in your interview. Guys, let's go ahead. What is the water for injection? Next question is what is the water for injection? WFI. In a short term we can say what is the WFI, mean of water for injection. Guys, so water for injection is the water ऑफ एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी। वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है एक ऐसा वाटर होता है जो एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी का होता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन एंड वाटर फॉर इंजेक्शन इज जनरली मेड बाय द डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। गाइस, रिमेंबर इट्स मेड बाय द डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे चलते हैं गाइस इसी के साथ। जस्ट व्हाट इज द वैलिडेशन? So guys, validation is a documented program or evidence that provides a high degree of assurance that a specific process, method or system that's consistently produce a result in which indicating the predetermined accepted criteria. Guys, you can take the screenshot, otherwise you can write in your notebook. So guys, next question is just what is the HPLC principle? What is the HPLC principle? So guys, HPLC is a technique used for the separating the mixtures of the components into the individual components, and it's based on the adsorption, partition, ion exchange and size exclusion principles, stationary phase and mobile phase used in it. And also HPLC used for the identification, quantification and purification of compounds from a mixtures. So guys, this is a principle of HPLC. Guys, remember this is a
very important questions for the pharma interview. So guys, next question is what is the molality and normality? You have to define molality and normality. Guys, you can take the screenshot, otherwise you can write in your notebook. You have to define molality, it denotes with the capital M, molality it denotes with the small m, and normality it denotes with the capital N. Guys, remember your next question is guys, if sticking observed during the tablet compression, so what may the probable reason for the same? अगर टेबलेट कंप्रेशन के दौरान स्टिकिंग ऑब्जर्व की जाती है सो उसका रीज़न क्या हो सकता है गाइस? सो इफ़ द ग्रेन्यूल्स आर नॉट ड्राइड प्रॉपरली, so sticking can occur. Then too little or improper lubrication can also leads to the sticking, and sticking can occur because of too much binder or hygroscopic granular. So guys, I hope that you have understood everything about this video, and guys, this video will be very helpful for cracking your pharma interview. So guys, one more important notification for you, that if you want to add in our WhatsApp group, in our Telegram group, and if you want to follow us on the Instagram, so guys, we have mentioned the link in our description of this video guys, as well as press the bell icon so that you will get further information easily. Guys, thank you so much for watching this video.